हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल सिफ्टेक सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट करेंगे सर्वेइंग एंड लेवलिंग पार्ट 10, जिसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91 टू 100। याद रखें, ये क्वेश्चंस और ये सीरीज आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर की गई है ताकि ये आपको गेट टेस्ट या एसएससी जेई एफपीएससी एग्जाम के लिए हेल्प आउट कर सके, और उन तमाम इंजीनियर्स के लिए जो कि अपने आप को किसी भी जॉब टेस्ट या इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं, ये वीडियोस उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो इन वीडियोस को मुकम्मल एंड तक देखिए और अपनी रहनुमाई हासिल कीजिए। इन वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें और सिफ्टेक सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर आपके साथ ये 10 क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सर्वेइंग एंड लेवलिंग फॉर एसएससी जेई पार्ट 10 में आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज नंबर 91 to 100, in which question number 91 says that the horizontal angle between the true meridian and the magnetic meridian is known as option A true bearing, option B dip, option C local attraction, option D magnetic declination. So horizontal angle between true meridian and magnetic meridian is called magnetic declination. So D is the correct option. Question number 92. Due to magnetic influence of Earth, the magnetic needle of the prismatic compass will be inclined downwards towards the pole. This inclination of needle with the horizontal is known as option A true bearing, option B dip, option C local attraction, option D magnetic declination. याद रखिए, ये जो नीडल है जो अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डिप होती है या डाउनवर्ड डिक्लाइन शो करती है, सो दैट इज कॉल्ड द डिप. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 93. At the equator, the amount of dip is option A 0, option B is 45 degree, option C is 60 degree, option D is 90 degree. इक्वेटर के ऊपर ये डिप जो है वो नहीं होती क्योंकि वहां पे अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होती है, सो लिहाजा 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, विच इज A. 94. At the magnetic poles, the amount of dip is option A 0 degree, option B 45 degree, option C is 60 degree and option D is 90 degree. So yes, at poles जो है ये 90 डिग्री होती है, so D is the correct option for this question. Question number 95. The lines of Earth's magnetic field run from option A south to north, option B north to south, option C east to west, option D is west to east. So lines of Earth's magnetic field run from north to south. B is the correct option. Question number 96. Which of the following statement is wrong? Option A magnetic meridian coincides with the true meridian at all places. Option B magnetic meridian does not vary from place to place on the Earth's surface. Option C magnetic declination at a place is constant. Option D all of the above. All these are the wrong options, so D here is correct, which is all of the above. 97. The line of culmination must be parallel to the horizontal axis. Option A is yes, option B is no. So B is the correct option. The line of culmination must be parallel to the horizontal axis. No. Option. Question number 98. The axis of telescope level must be dashed to the line of culmination. Option A parallel, option B perpendicular. Axis of telescope must be parallel to the line of culmination. A is the correct option. Question number 99. In the surveying telescopes, crosshairs are fitted in option A center of telescope, option B optical center of the eyepiece, option C front of the eyepiece, option D front of the objective. In surveying telescopes, crosshairs are fitted in option A front of the eyepiece. C is the correct option. 100. In the surveying telescope, diaphragm is held option A inside the eyepiece, option B inside the objective, option C nearer to the eyepiece, option D is nearer to the objective. So in surveying telescope, diaphragm is held nearer to the eyepiece. Option C is the correct answer for this question. So this was our part 10 video lecture on surveying and leveling, जिसमें हमने 10 MCQs आपके साथ शेयर किए, क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक. आई होप आपने इनको लाइक किया होगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी सर्वेइंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में. मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम पार्ट 11 में फर्दर 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.